started in this, right? तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लाइक वी हैव फेमस लेक्स, उनका नाम है लेक सुपीरियर, लेक होरन, देन वी हैव इरी, राइट? दिस आर नेम्स ऑफ लेक. एंड देन वी हैव ओंटारियो, right? They are connected by these canals, and this very important hub for industrial development. और एक inland waterway को डेवलप करती है. एक एस्चुरी है आपका सेंट लॉरेंस में, रिवर में, राइट? दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और एक यूनिक कमर्शियल वाटरवे डेवलप करता है ये आपका लेक इनलैंड वाटरवे, राइट? नॉर्दर्न अमेरिका के लिए. और पोर्ट्स ऑन दिस रूट्स मेनली बहुत अच्छे और बहुत फेमस पोर्ट्स इस रूट पे आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली इस वाटरवे में. वी हैव डिल्यूथ, बफेलो. These are very important and famous ports, and they have all facility like ocean ports having. तो ऐसा नहीं लगता कि inland water ports आए हैं. एंड बहुत सारे ओशन गोइंग वेसल्स जो होते हैं वो इस रूट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, राइट? सो दिस रूट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इट कनेक्ट विद मॉन्ट्रियल. सो इट कनेक्ट विद मॉन्ट्रियल, राइट? So this is very very important for that. So river mainly deep inside the continent to Montreal. This is a very important port, a very important industrial town over there. Here goods mainly transshipped to smaller vessels. बड़ी बड़ी ships से जो सामान आता है वो छोटे vessels में डाल दिया जाता है यहाँ पर. So that is mainly carried out with the help of the smaller vessels. Then we have because a lot of rapids are there. Rapids are not good for ports and for good navigation. So that's the reason why this has been done here. So canals का construction काफ़ी deep तक किया गया है, right? ताकि rapids जो problem हो रही है that can be sorted out. Then we have Mississippi waterways. Again it's very very important, Mississippi waterways. Mississippi waterways and again in USA. आप लोग देखेंगे तो you come across maximum waterway has been there been in USA. तो इसको मिसिसिपी ओहियो वाटरवे, मिसिसिपी रिवर का नाम है, ओहियो वाटर अगेन नेम ऑफ अ वाटरवे, राइट? तो इट मेनली कनेक्ट्स इंटीरियर पार्ट ऑफ USA and it is in Gulf of Mexico to the south. और यहाँ तक इसका कनेक्टेड है. Then we large steamers can go through this route. बहुत बड़े बड़े steamers का इस्तेमाल होता है इस रूट में. There is a place called Minneapolis. वहाँ तक steamers का इस्तेमाल होता है इस रूट में. Then we have air transport की अब हम लोग बात कर लेते हैं. This all waterway has been completed. So air transport is the fastest mode of transportation as we already know, but it's very very costly. ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है. सो बट इफ़ यू वांट टू मूव वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जाना है आपने तो दैट कैन बी यूटिलाइज्ड, राइट? सो प्रेफर्ड बाय दोज पीपल हु हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस. बहुत दूर तक ट्रेवल करना हो तो देन वी यूज़ एयरवेज, राइट? सो अदरवाइज एयरवेज कैन बी रीच टू रिमोट एरियाज आल्सो. दैट इज़ आल्सो एडवांटेज ऑफ दीज वेयर टेरेन इज़ वेरी टफ, राइट? वैल्यूएबल कार्गोज can be moved from one place to another very fast worldwide with airways, right? So that can be also transported. So it can be easily reached to those areas which are inaccessible. जहाँ पे आप पहुँच नहीं पा सकते वहाँ पे air transport is a good answer for that. It can solve the purpose for that. So air transport had brought a revolution in the world. अगर हम लोग बोलें एक क्रांति लाने के लिए अगर mode of transportation में, that is due to airways, right? And the frictions mainly created by mountain snows or desert that stop the movement of a transportation, but airways doesn't have this type of things, right? So therefore airways through this accessibility is very easily we can reach to a remote area very fast in a very very small time. So mainly airplane can bring varied articles to the Eskimos. Eskimos एक बहुत ठंडे एरिया में रहते हैं तो वहाँ का सामान अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो that can be carried out with the help of that, right?
Otherwise, to reach in these areas is very difficult. So northern Canada is totally inhabitable, but some tribals are living there. So in those areas, this air transport solve the purpose. In Himalayan regions also, mainly the routes is obstructed by landslide, avalanches, heavy snowfall. That time this air travel is very important. So this is only the alternative where we can easily reach to very important places, right? So एयरवेज स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एरिया हमारे डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एयरवेज कैन सॉल्व द पर्पस, राइट. लाइक एयर स्ट्राइक्स, जब यूएसए ने कोई एयर स्ट्राइक्स करी हो, राइट, यूएसए और बाकी कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, और उस टाइम एयरवेज ने बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व किया था, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ में दे कैन नॉट गो थ्रू एनी रूट. So that time the purpose has been sorted out by airways, right? So airways बहुत expand हो रहा है धीरे धीरे. It is expanding its horizon. It's going to very vast areas now. Earlier we cannot think of. So new manufacture of airways are coming. New aircrafts are also coming. Then their operations are also there. So you need a lot of infrastructure to set up this type of things. आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी, right? So that's the reason why that things are there. So you have to set up hangars where you can keep your planes. Landing के लिए, fueling के लिए, maintenance facilities for aircrafts are required for that. So construction of big airports are very expensive. तो बहुत महंगे पड़ते हैं, right? तो and develop in more industrialized countries, जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो, वहीं पे आप एयरपोर्ट्स को सेटअप कर सकते हो. हर जगह आप एयरपोर्ट को सेट नहीं कर सकते. Therefore, airport transport is very expensive. So at present, no place in the world is more than 35 hours. अगर आपको किसी भी एरिया में पहुंचना तो 35 घंटे से ज़्यादा का टाइम आपका कहीं नहीं लगेगा. आप you can reach to any point of the world. You can go from that, right? Why it is happening, right? Due to people, because they love to fly by planes. People love to fly, right? तो आप लोगों को पता है कि किन्होंने इनको बनाया और आज इसका क्या मुकाम है. सो ट्रैवल बाय एयर नाउ वी कैन मेज़र बाय आवर्स एंड मिनट्स. कितनी देर में हमारे को पहुंच सकते हैं, कितने मिनट्स में हम लोग वहां पहुंच सकते हैं. अब ईयर और मंथ्स की बात नहीं है. इफ़ यू वांट टू गो टू एनी रिमोट एरिया आल्सो, वेरी फार ऑफ एरिया, यू कैन गो इन मिनट्स एंड आवर्स. सो सर्विस, एयर सर्विस इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सारे वर्ल्ड में अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, तो यू कैन रीच टू एनी पॉइंट वेरी फास्ट, राइट. सो यूके वर द फर्स्ट कंट्री हु यूज कमर्शियल जेट, राइट. सो दिस आर द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड फॉर दैट. सो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलोड देन, और आज यूएसए become a very important spot for this. USA developed most post-war international airports, right? Civilization को शुरू करने वाला. तो we have 250 commercial airlines, private airlines, government lines, वो हमारे को दिखेंगे इसमें, right? तो इतने लोगों ने शुरू कर दिए हैं almost airways, right? And that offers regular service to different parts of the world. So recent development अगर हम देखें तो that also change the future of air transport. तो अगर आज बहुत सारे changes हो रहे हैं air transport में. We come across with supersonic planes. Earlier we cannot think. बहुत fast planes का develop हो गया है. That covers the distance between London to New York within 3.5 hours. Both are located at very different places, but it can be easily that. Then we have intercontinental air transportation. So we have intercontinental. So in northern hemisphere there is very much connectivity east and west belt through intercontinental air routes. इससे भी हम लोग इसको connect कर रहे हैं. So mainly dense network exists in almost eastern USA, Western Europe, Southeast Asia, USA. Or it connects almost 60% of the airways in the world in these regions, which has been mentioned here and that. So we come across with very famous ports like we have New York, we have London, we have Paris, we have Amsterdam, we have Frankfurt, we have Rome. So that is very famous ports which are the airports.
Then we have Moscow, then we have Karachi, then we have New Delhi, Mumbai, Bangkok, Singapore. So these are some famous airports. Then we have Tokyo, San Francisco, Los Angeles and Chicago. These are very important nodal points for air roads. From here maximum flights we can travel from one place to another. So these ports play a very important role, right? And this is acting as a nodal point. Africa में अगर हम लोग देखें, Africa, some part of Asiatic part which is in Russia and in South America, that lacks air transport, air services, because we need a lot of big infrastructure for developing airports that this country doesn't possess. So there we find limited air services. हमें कहीं यहाँ 10 to 35 लैटिट्यूड के बीच में भी एयरपोर्ट और एयर सर्विसेज कम नज़र आते हैं, स्पेशली इन सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस इन दिस रीजन, राइट. देयरफॉर द वर्ड्स पार्शियल पॉपुलेशन हैज़ बीन मेंशन्ड, राइट. लैंड मास इज़ वेरी लिमिटेड एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. So the new mode of transportation which we come across, that is pipelines. तो अब हम लोग pipelines को देखेंगे. So pipelines are mainly used to transport liquids. हम लोग पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करना है, गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो that is the best way to transportation for this. So we can travel, transport this type of things, right? Petroleum, natural gas and all can be transported through pipelines. तो हम pipelines के थ्रू इसको ट्रेवल करवा सकते हैं, राइट. और इसका अनइंटरप्टेड फ्लो होगा, राइट. फ्लो कंटिन्यूसली होगा, राइट. सो वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, ऑलमोस्ट आपका पानी का जो ट्रेवल होगा वो थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू ही होगा. देन कुकिंग गैस और एलपीजी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वी कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस. हम लोग उसको पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल करवा सकते हैं. सो दैट्स इट. एंड देन वी हैव many parts of the world are connected through pipelines, especially in liquefied coal. अगर हम coal को solid form में नहीं liquefied में turn up करके, that can be easily transported through pipelines. So this is a new mode of transportation which is we are using. न्यूजीलैंड में लोग मिल्क को सप्लाई करते हैं थ्रू पाइपलाइंस. सो लिक्विड को तो हम लोग ईजिली ट्रेवल करवा सकते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, फॉर फार्म्स टू फैक्ट्रीज. सो पाइपलाइंस आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अर्लियर इट वाज नॉट देयर. यूएसए में व्हेन देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस, एक जगह से दूसरी जगह ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन स्पेशली इन यूएसए. So that also we can see in this, right? So pipelines are also playing a very important role, right? Producing areas से consuming areas तक अगर हमें बनाना है, very famous pipeline, the name of that is called Big Inch, right? That carries petroleum from oil wells to the Gulf of Mexico, से लेकर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक ये पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोल जाता है. So 17% of all flight of that is carried through pipelines in the USA. Then in Europe we have Russia, West Asia and India. We are also using pipelines for that. We are trying to connect oil wells to refineries. हम लोग oil wells को refinery के साथ connect करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, right? और ports को डोमेस्टिक एरिया के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स की तरह कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स पाइपलाइन इज यूजिंग. तुर्कमेनिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन सेंट्रल एशिया, हैज़ बीन एक्सटेंडेड पाइपलाइंस टू ईरान, राइट? तो ईरान तक, एंड इट्स आल्सो कनेक्टिंग सम पार्ट्स ऑफ चाइना, राइट? सो दैट्स इट. सो द पर्पस ऑफ ईरान इंडिया, अभी हम लोग एक प्रपोजल है ईरान और इंडिया के बीच में पाइपलाइन का, एंड पाकिस्तान आल्सो कम्स अंडर इट. तो क्योंकि हम ईरान से इंडिया तक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, बिकॉज ईरान से हम लोग वी आर इम्पोर्टिंग ऑयल, सो वी वांट टू सेट अप ए बिग पाइपलाइन देयर ऑन दैट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस नेचुरल गैस पाइपलाइन दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड इन द वर्ल्ड, एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट, राइट? नाउ वी हैव कम्युनिकेशन. I told you the starting of the chapter is transportation and communication. So transportation I did. Now we'll do communication.
So human beings use different methods to communicate. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. थ्रू टेलीग्राफ, थ्रू टेलीफोन वी आर ट्राइंग अपने मैसेज को कन्वे करने की फ्रॉम वन एरिया टू अनदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेलीग्राफ अर्लियर यू आर यूजिंग, राइट, when we were under some rule, when colonization period was there, telegraph was the fastest medium to communication, especially in America West, especially it has been started there, right. But now we have a very strong medium of transportation has been started, जो पहले नहीं थे हमारे पास, right. So अगर हम लोग देखें अर्ली और मिड 20th सेंचुरी में, तो विल फाइंड अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी. अमेरिका की एक बहुत फेमस कंपनी अमेरिका टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी दैट एंजॉय मोनोपोली ओवर यूएसए की टेलीफोन इंडस्ट्री पर. सारा कमांड यूएसए की सारी टेलीफोन इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय दिस एजेंसी. सो टेलीफोन बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली फॉर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट अर्बनाइजेशन. अगर अमेरिका में पॉसिबल हुआ तो टेलीफोन के कारण ही ऐसा पॉसिबल हुआ, राइट. मेनली सो मेनी फर्म्स सेंट्रलाइज्ड देयर फंक्शनिंग, और बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज आर एबल टू सेट अप ड्यू टू दिस थिंग्स. इसलिए उन्होंने इसको फॉर्म अप किया और दे लोकेट देयर ब्रांच ऑफिसेस. छोटे छोटे शहरों में भी दे एबल टू सेट अप थ्रू द टेलीफोन्स, राइट. सो इवन टुडे द टेलीफोन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कनेक्टिंग द पीपल, टू कम्युनिकेट द पीपल. तो आज भी हम लोग इस मोड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. सेल फोन्स आर नाउ become very important mode of communication, and these cell phones are mainly connected by satellites. तो आप अनइंटरप्टेड बात बहुत देर तक कर सकते हैं, आप किसी से भी कम्युनिकेट बहुत फास्ट कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स रूरल कनेक्टिविटी इज़ पॉसिबल ड्यू टू this thing only, right. So there is a phenomenal place of this development is there. So first major through comes when optic fiber cables का आना, उसके कारण इसमें revolution आई एक तरीके से, जिसको OFC भी बोलते हैं. तो आज हम 4G 5G की बातें करते हैं, that is due to this optic fiber cables, right. So there is a lot of competition in telephone companies all over the world. We come across this Vodafone, Idea, Airtel, right. So they try to upgrade their copper cable system, right. और ये optic system को include कर रहे हैं वो लोग. So that's it. So इससे आपका बहुत सारा data can be travel from one point to another, and it can be transmitted very fast at very high speed and without error, right. So everything we are planning for digitization that started in 1990. Telecommunications started slowly, but now due to help of computers we try to integrate big network, and now internet is taking its place. So it's all possible through satellites. So today internet is the largest electronic industry network of the world. 1000 millions लोगों को all over 100 countries से भी ज़्यादा से connect हो पा रहे हैं through with the help of internet. That is possible through only internet. So internet has revolutionized all the system. So communication is possible now through satellites. Earlier it was not possible, right. So now it has been started through this one. So communication technology started in 1970 after USA, और जो USSR की countries थी, जो USSR में थी, and they did a lot of research especially in space. With the help of that they able to send satellites. So now we have so many artificial satellites which we are sending, and that has been successfully deployed or in the Earth's orbit. और हम लोग अब रिमोट एरियाज से भी कनेक्ट इजीली हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट. सो देयर हैव बिन यूनिट कॉस्ट अगर हम लोग देखें और टाइम ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो इट्स वेरी चीप, इट्स नॉट सो कॉस्टली. दैट्स द रीज़न डिस्टेंस इज़ नॉट द पॉइंट नाउ, राइट. सो इट मीन्स the cost
ऑफ द कम्युनिकेशन ओवर 500 किलोमीटर्स अगर हम लोग देखें तो भी हम लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। 5000 किलोमीटर्स आल्सो कनेक्टेड थ्रू सैटेलाइट्स, राइट। सो इंडिया हैज़ मेड लॉट ऑफ स्ट्राइड्स, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस करी है सैटेलाइट डेवलपमेंट में भी, राइट। सो आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट हु लॉन्च वी सेंट फर्स्ट सैटेलाइट, द नेम ऑफ दैट सैटेलाइट वाज आर्यभट्टा। तो हम लोगों ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1979 एंड भास्करा 1 in 1979, देन वी हैव रोहिणी 1980। तो हमारे ये सैटेलाइट्स का नाम है। 18 जून 1981 app that's called Ariane passenger payload experiment was launched through Ariane rocket, right? So how it has been started, and now we already know. Then we have Bhaskar Challenger and INSAT 1B, ये आपके सैटेलाइट्स के नाम है और आपका इससे लॉन्च होते हैं सैटेलाइट्स। INSAT 1B तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीविज़न और रेडियो इज़ पॉसिबल ड्यू टू दिस रीजन्स ओनली। यही इसी कारण ये टेलीविज़न और रेडियो भी बहुत इफेक्टिव है ड्यू टू दिस, राइट। अगर आज हमें वेदर फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट करते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न, राइट। तो हम उसके कारण पॉसिबल होता है। तो वी हैव अ साइबर स्पेस इंटरनेट। तो साइबर स्पेस is the world of electronic computer. So cyberspace is very important electronic computer that has been there. Mainly with the internet we have a very important body which is working, that is called www, that is called World Wide Web, which is there. In simple word, it is the largest body who controls world communication, if we can say like that, right? So इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर। सो दैट्स द मेन थिंग। सो इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनेट, इसको हम लोग इंटरनेट भी कहते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये कहीं पे भी एग्जिस्ट होता है, कहीं पे भी एग्जिस्ट करा जा सकता है। इट कैन बी इन ऑफिस, बोट में, फ्लाइंग प्लेन, राइट, एनीवेयर इट कैन बी सेट अप। The speed at which electronic network work, that is unprecedented. Human history में इतनी तेज communication is impossible. So there is less than 50 million internet user in 1995. If you see today, that world is totally connected with internet. So 400 million people in 2000 AD, so 1 billion in 2005. So see how many people are using. The next billion will use by 2010. Last 5 years there has been shift among global users from USA to other developing countries. Now developing countries are using more and more internet. Earlier we cannot think of that. So percentage share of USA has dropped down. That has gone from 66 to 25 in 2005. But developing countries are taking maximum share of that. A majority of the world users are in USA, UK, Germany, Japan, China and India. So that's it. So maximum countries, developing countries are using. So billions are using internet each year. Cyberspace will expand the economic and social space of human through emails. हम लोग email आम यूज़ करते हैं. E-learning is now there. E-governance is there. A lot of with the help of this technology we are able to do. So internet ke through fax, television and radio will be accessible, right, where it's not possible earlier. So there is no point where internet is not helping us. In all the fields it's really helping us a lot. So in these modern communication system, more than transportation, the concept of global village become a reality. Otherwise we cannot think all world can be connected throughout, but now whole world is connected to one another with the help of this. So this is a chapter, I hope so you like it, and next chapter will definitely upload in a very short. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.